So today we are going to start a new topic, tensor product of modules. So it is an operation between two modules that if M and N are R modules, and if so let Mn be R modules. Then after taking their tensor product, again we will get an R module. So it is an operation between two modules. But why this operation is important, uh, and why I want to compute the tensor product, uh, and which properties the tensor product of module will satisfy. So we will see this thing. So first try to recall the definition of a bilinear map. So what is that definition? So any idea about a bilinear map? So we know that what is a linear map. But like a linear map, we can also define a bilinear map. So we know that M cross N, which is just, you can take this thing as the direct sum or the direct product of modules, which is defined in this way that it contain elements which are in the form of x comma y, where x is M and y it is an element of N. So this is just uh, and so here we are assuming that M and N are R modules, and also let K be an let K be an R module. So we can define a map. So a map, uh, let's say theta, from M cross N to K is called a bilinear map. So, Nakiba, any problem? Okay. Assalamualaikum, sir. Sir, I just joined the meeting. Okay, okay. Finish. So this is called a bilinear map. So bilinear map, that we know that a linear map, also in the case of thing, so we can see a linear map, a simple linear map from M to K in this form, that it will satisfy this property that let's say if theta is a linear map, so theta of x plus y is equal to theta of x plus theta of y. And what is the second condition? That theta of alpha x is alpha time theta of x. So this, if we want to see a linear map from M to K, so this is a definition. That is a linear, a module homomorphism, or a R linear map, or just a linear map. It could be seen in this way. But now I want to see a bilinear map. So in the case of bilinear map, so what is the condition? That now we want to define bilinear map from the uh, cross product of M cross N. So which is, we know that this is also an R module. So in this case, what is the condition? That it should be linear in the first coordinate, and it should be
linear in the second coordinates. So that's why we termed this map as a bilinear map. So linear mean that linear in the first coordinate or linear in the second coordinate. So how can we write it mathematically? So what is the condition that if number one, that theta uh, of x1 plus x2 comma y, so it is equal to theta of x1 plus theta of x2. Oh, sorry, not in this. So it is equal to theta of x1 y plus theta of x2 y. What is the second condition? So that uh, for r is, so here r is an element of ring. So r x theta of r x comma y, it is equal to r times theta of x y. So actually this condition shows that it is linear in the first coordinate. So it is linear in the first coordinate. And what is the second condition? The third condition, that now it should be linear in the second coordinate. So x of y1 plus y2, so it should be equal to theta of x comma y1 plus theta of x comma y2. So and theta of uh, r time, so where again r is an element of a ring, so it is equal to r times theta of x comma y. So this is the definition of a bilinear map. So a map theta from M to K is called a bilinear map. So it is, if it is linear in the first coordinate, that is satisfying the condition number uh, 1 and 2, and it is also linear in the second coordinate. So now, what is the point that so usually if M and N, if we have two R modules, M and N, and K is another R module, and here we have theta, which is a bilinear map. So, so what is the point that the study of bilinear maps from M cross N to K can be reduced to the study of linear map
on a suitably defined module that is tensor product of M and N. So what is the meaning of this thing? So what they are trying to say that whenever I have a bilinear map theta from M cross M to K, so I can define a module which will be the tensor product of M and N in such a way that there exists that's there in such a way that we can exist we can create uh, a unique linear map. We can create a unique linear map from this tensor product T to the R module K. So this is an idea that whenever I would like I want to study linear maps by linear maps from M cross N to K. This study could be reduced to a linear map from T to K. And we will also see that there exists a natural map from M cross N to K. Okay, and let's say it is equal to F. So this map would be a natural map. This is the motivation, and now we will see the proper definition. So what is the definition? That that M and N be R modules. So the tensor product of M and N is a pair. So T is an R module, and theta is a by and theta from M cross N to T. So is a R. So it is an R bilinear map with the property that for any R module K, an R bilinear map F from M cross N to K, there exists a unique
R linear map f tilde from T to K such that f bar composition theta it is equal to f. So this is a very abstract definition. So initially it seemed that things are not clear that actually what is the tensor product. So for example, if we have m and n to our modules, then we exactly know that what is the direct sum of m and n. We can see actually elements of direct sum m and n. But here the tensor product is defined in a very abstract way that actually it is defined with the help of property. So we just know that uh, it is just a pair. Uh, so by definition, so it is just a pair of an R module T in a bilinear map theta, which is coming from m cross n to T. We don't know the exact expression of T at this moment, and also we don't know that what is the exact expression of this bilinear map theta. But we know that it is an R module theta with a bilinear map theta from m cross n to T. And this is important that we are defining this thing with the help of this property. So what is the property? That for any R module K, an R bilinear map from M cross M to K. So इस प्रॉपर्टी को समझाने की कोशिश करता हूँ. So इसमें एक पॉइंट है आप लोग को कि अक्सर औकात अलजबरा में जब हाई लेवल पे जाते हैं, so now you have to define things with the help of some properties, and these properties are also termed as universal properties. So sometimes you have to characterize uh, uh, an algebraic structure with the help of its properties. So हम इस तरह से इसको डिफाइन कराते हैं कि हमें exactly अगर उसकी शक्ल है, उसका जो वो मालूम भी ना हो, हम जस्ट क्या करते हैं, हम कहते हैं कि ओके वो जो कुछ भी चीज़ यानी कि होगी, so we are mainly interested that that thing is satisfying our universal property or not. सो दैट्स वाई इस प्रॉपर्टी को हम यूनिवर्सल प्रॉपर्टी कहते हैं, बिकॉज वो उसकी एक मेनली करेक्टरिस्टिक होती है उस चीज़ को डिफाइन करने के लिए. तो आप ये टेंसर प्रोडक्ट ऐसी एग्जांपल है कि हमने डायरेक्टली अभी एक्सप्रेशन लिखा नहीं है डेट व्हाट इज द टेंसर के टेंसर प्रोडक्ट के एलिमेंट्स किस फॉर्म में होंगे, अभी हमें नहीं पता, बट वी नो दैट what would be the tensor product of m and n if it's satisfying the property which is defined in the last three lines. So I just want to elaborate this property that what is ये property क्या कह रही है. So अब आप लोग इनके देखेंगे हर कई मर्तबा कि now things are defined with the help of its uh, or an algebraic thing could be defined with the help of its universal property. So इस प्रॉपर्टी को इस तरह से देख लेते हैं, तो वो क्या कह रहा है कि m क्रॉस n है. So 10 so 10 and t, so t is a tensor product है. So tensor product mean that it is an R module which is a with a bilinear map theta from m cross n to t. Now what is the universal property? Universal property is that whenever that whenever uh, we have a bilinear map from m cross n to k, then we can always construct. So there exists a linear map. So if this is a bilinear map from m cross m to k, so we can always construct a linear map f bar.
from T to K, such that this diagram commutes. Uh, what is the meaning of this thing? सर आप थीटा को भी बाइलिनियर कह रहे हैं और एफ को भी बाइलिनियर कह रहे हैं. हाँ, दोनों बाइलिनियर है, but ओके. so theta. Okay, class. Just wait for a minute. अतीक असाइनमेंट कर लिया? असाइनमेंट हाँ कर लिया मैंने. पूरा कर लिया? हाँ कर ली थी मैंने. माशाल्लाह. वो जो दूसरी बुक के क्वेश्चंस हैं वो हो रहे हैं? हाँ हो गए थे वैसे, सारे हो गए थे. अच्छा. वो जो टॉपिक सर ने नहीं पढ़ाया वो भी मैंने बुक से पढ़ के कर लिया था. वाओ, जबरदस्त. नकीबा, कौन सा टॉपिक नहीं पढ़ा है मैंने उसमें से? सर मैक्सिमल ऑफ पावर सीरीज वाला, मैक्सिमल आइडियल ऑफ पावर सीरीज. अच्छा, मैक्सिमल. तो पावर सीरीज इनको तो मैंने लोकल रिंग प्रूफ नहीं करवाया था. हाँ, लोकल रिंग प्रूव करवाया. तो उसके कितने मैक्सिमल आइडियल्स होते हैं अगर ओवर अ फील्ड हो? तो उसमें क्या प्रॉब्लम क्या था? पावर सीरीज ओवर अ रिंग थी क्या? ये जो प्रॉब्लम था वो पावर सीरीज ओवर अ फील्ड से रिलेटेड था. ख्याल से पावर सीरीज ओवर अ फील्ड थी. आप देख के बताएंगी. और मैंने ओवर अ फील्ड Yes, sir. पावर सीरीज को, ये तो प्रॉब्लम मैंने क्लास में करवाया हुआ है. जी ये अगर तो आपने पावर, करवाया. मैंने तो इसको ऑलरेडी क्लास में प्रूफ करके दिखाया है कि ये लोकल रिंग होगा, क्योंकि इसका सिर्फ एक ही मैक्सिमल आइडियल होगा. है ठीक, आप वेरीफाई कर सकते हैं. सर जो पावर सीरीज से रिलेटेड प्रॉब्लम था वो ओवर अ फील्ड था ना? यस सर, मेरे ख्याल में ओवरऑल फील्ड था. तो मैंने क्लास में प्रूफ नहीं करवाया था कि ये जो रिंग होगा ये लोकल रिंग होगा? सर ये वाली बात सर प्रूव की थी कि ये तो करवाया था सर. हाँ, ये तो ये चीज़ करवाई लोकल. मैंने क्लास में. तो मुझे असल में हो रहा था कि कौन सा टॉपिक मैंने क्लास में नहीं करवाया. आप कह दी कि सर ने क्लास में करवाई नहीं, तो मैं चाहे तो शायद मैंने गलती से कुछ ऐसा दे दिया. ओके. सो यस Munira, f is a bilinear map and theta is also a bilinear map. Okay. But theta is a bilinear map from the definition of the tensor product, because by definition a tensor product is a pair. So where T is an R module and theta is a bilinear map from M cross N to T. And what is a universal property? That whenever we have a bilinear map M cross N to K, so we can always construct, there always exists a linear map from T. So this is a linear map. So we can always construct a linear map from T to K. And what is the property of this linear map? That this diagram commutes. अब देखें, ये वर्ड भी बड़ा अलजेब्रा में यूज़ होता है कि जब हम कहते हैं कि डायग्राम कम्यूट्स करती है. So what is the meaning of this thing? That in this figure, yeah, so if we want to move from one position to another position, so in this figure, if we want to prove, if we want to move from m cross n to k, so we have two choices. So हम तो या तो डायरेक्टली f अप्लाई कर दें, और डायग्राम कम्यूट्स होने का मतलब क्या है? दैट फर्स्ट वी अप्लाई थीटा एंड देन वी विल अप्लाई दिस f tilde. इसको मैंने, एंड देन वी विल अप्लाई f tilde. सो डायग्राम कम्यूट्स होने का मतलब क्या है? कि दैट या तो मैं पहले f अप्लाई कर दूं, देन या तो फिर मैं तो ये इट शुड बी इक्वल टू, फर्स्ट आई विल अप्लाई थीटा एंड देन आई विल अप्लाई f tilde.
अच्छा, यहाँ पे मैं कॉम्पोजिशन को अभी लिख रहा हूँ, मगर बाद में मैं कॉम्पोजिशन को नहीं लिखूंगा। बाद में जस्ट मैं सिर्फ इसको चीज़ को यूँ करके लिखूंगा, तो आप लोग को खुद ही अंडरस्टैंड कर लेगा कि जब एफ इंटू थीटा लिखा, एफ टिल्डा इंटू थीटा लिखा है, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस थिंग दैट एफ टिल्डा कॉम्पोजिशन थीटा, so this thing it is equal to f. So actually this is a universal property. So this is a universal property of the tensor product. So we can identify uh, uh, an R module T as the tensor product of M and N with the help of this property. Okay, so जी अतीक। सर यहाँ पे ये चीज नहीं है कि टी के का सब मॉड्यूल हो या फिर के टी का सब मॉड्यूल हो, तो नहीं, ये कोई चीज ऐसी नहीं। चीज़ नहीं, नहीं कोई ऐसी चीज़ कंडीशन नहीं है। एम एन एन कोई इंडिपेंडेंट आर मॉड्यूल्स हैं और के भी एक आर मॉड्यूल है। ओके, सही सही। कोई ऐसी कंडीशन नहीं है। और हम देखेंगे कि जब हम टी को कंस्ट्रक्ट करेंगे तो टी वुड आल्सो बी एन आर मॉड्यूल। सो नाउ अगेन जो क्वेश्चन है हमारा इम्पोर्टेंट है दैट नाउ वी डिफाइंड द टेंसर प्रोडक्ट ऑफ टू आर मॉड्यूल्स एम एन एन with the help of the universal property. But we want to see actually that okay, could we construct an R module T which will satisfy the universal property of the tensor product. और वो जो जो मॉड्यूल होना चाहिए वो यूनिक भी होना चाहिए, बिकॉज दो चीज़ों का प्रोडक्ट हमेशा क्या होता है, यूनिक होता है. So that's why so we have a theorem. So what is the theorem that uh, the tensor product of M and N exists? So we can construct an R module T which is satisfying the universal property of the tensor product. The tensor product exists and it is unique. So we can construct the tensor product and this module T it is a unique module. तो इसका मतलब कि M and on का tensor product, so it is like a normal operation. Like if you take the direct sum of M and N, then we will get a unique module which is the direct sum of M and N. In the same way, since we define the tensor product with the help of of the universal property, so when we construct the tensor product of M and N, so we will say that this product uh, would be unique. So now, what is the proof? So जो first part है, actually it is related with the construction. So it is related with the existence care or construction of the tensor product. Okay, so initially what we have seen, so
we defined the tensor. So we know that M on n. So it is an so it contain elements. इसको बोल के थोड़ा सा और बड़ा करके ना. It contains elements which are in this form, which are in the form of x comma y. Okay, so now with the help of this thing, I can construct or what you can say that take or linear combination with the help of M and N. So construct a module M cross N. Uh, construct a module with generators are sitting in here in M cross N. So this module contain or elements which are in this form, where these all xi's are xi's and yi's are sitting in M and N. So in this way, we can construct an R module. So what is the difference? So this so this thing is just contain elements. So this contain elements which are in the form of x comma y, and now this thing contains elements which contain all formal linear combinations which we can construct with the help of xi's comma yi's, where xi's comma yi's are sitting here and all ri's are element of R. Okay, so so this is the point. इनको थोड़ा सा मैं so now there exists a map as because you can always take each xi into each xi here. So since m cross n is a generator, so you can always see an element here as an element in this R module. Okay, so now what is the third point that I want to I want to construct a bilinear map. So a bilinear map from M cross N to K. So इसको मैं इस मॉड्यूल को मैं algebraically यहाँ पे इस तरह से लिख देता हूँ कि initially we have M cross N. From M cross N we constructed this thing actually, which is the set of all finite linear combination, and so this is a free R module. Why I'm saying this is a free R module? Because all elements of M cross N are working as a basis, so this is a free uh, for module or free R module on the set M cross N to N, that is all formal R linear. It contains all formal R linear combinations of the type which I defined earlier. So what I did for the construction, initially
we have this R module m cross n. So with the help of this R module, we just constructed a free module which contain all formal linear combinations which are in this form. Now, what is the first task that I want to construct theta, a bilinear map, because by definition, uh, theta is a bilinear map from m cross n to t. So initially, I want to construct t in such a. So what is the task that I want to construct? इस टास्क को मैं यहाँ पे ब्लू से लिख रहा हूँ, फिर मैं इसको इरेज कर दूंगा. So what is the task that we want to construct, because this is a key thing. We want to construct T in such a way or such theta from m cross n to T should be bilinear. So this is the condition that हमने जो भी टी कंस्ट्रक्ट करना है उस तरह से कंस्ट्रक्ट करना है कि ये जो थीटा मैप यानी कि हो, ये क्या हो, बाइलिनियर मैप हो, क्योंकि ये हमारे पास कंडीशन है. और उसके बाद फिर हम देखेंगे कि ये टी ये यूनिवर्सल प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करवा रहे कि नहीं. बट हमें टी इस तरह से कंस्ट्रक्ट करना है कि थीटा हमारे पास बाइलिनियर मैप हो, बिकॉज दिस इज द फर्स्ट कंडीशन फॉर द टेंसर प्रोडक्ट. अब यहाँ पे थोड़ा सा एक चीज़ स्टार्ट होती है जो आप लोग को और से देखना पड़ेगी. इसको भी मैं थोड़ा छोटा कर दूँ. सो लेट्स से अब देखें, आप लोग को इनिशियली क्या चाहिए कि मैप को बाइलिनियर चाहिए. सो मेरा ये अब कहना ये है कि मैप को बाइलिनियर लेने के लिए ये जो हमने मॉड्यूल कंस्ट्रक्ट किया था एम क्रॉस एन वाला, के जनरेटर्स लेते हुए, इसका क्वोशंट लेना पड़ेगा इसके किसी सब मॉड्यूल्स के साथ. वी नीड टू टेक द क्वोशंट ऑफ दिस मॉड्यूल with a some sub module with the sub module of this thing. So इसका क्वेश्चन हम किस तरह से ले सकते हैं. अब दोबारा इसके कुछ एलिमेंट्स को मैं ऊपर यानी कि लिख देता हूँ. So it contain elements which are in the form of summation of ri xi कॉमा yi, और ये मैप तो नेचुरली इसके अंदर ही मैप होगा. तो अब मुझे इस तरह से देखिए, ये तो एम क्रॉस एन टू दिस मॉड्यूल तो एक नेशनल मैप एग्जिस्ट करता है, बिकॉज वी कैन ऑलवेज टेक दिस एलिमेंट एक्स कॉमा आई टू एक्स कॉमा आई. बट आई वांट टू कंस्ट्रक्ट अ क्वोशंट मॉड्यूल ऑफ दिस मॉड्यूल सच दैट जो क्वोशंट मैप डिफाइन होगा. सो वी नो दैट वी कैन ऑलवेज डिफाइन द क्वोशंट मैप. अगर मेरे पास एम से एम क्रॉस इफ एन इज एन आर मॉड्यूल, सो जब मैं हमेशा एक 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 वो डिफाइन करा सकता हूँ, एक नेशनल मैप डिफाइन करा सकता हूँ जिसको क्रोनिकल होमोमॉर्फिज्म भी कहते हैं, कि व्हेन एलिमेंट एक्स इज एन एलिमेंट, तो ये कहाँ पे मैप हो जाएगा, कोसाइट इंड्यूस्ड बाय एक्स. सो दिस इज अ नेचुरल मैप फ्रॉम अ मॉड्यूल टू इट्स क्वोशंट मॉड्यूल. सो what I'm trying to show that actually uh, there exists a natural map or a canonical map from this module to its quotient module. यहाँ पे कोई सा भी इसका एक सब मॉड्यूल होगा.
उसके भी कोई ना कोई जनरेटर्स होंगे। अब मैं देखना चाह रहा हूँ उस सब मॉड्यूल्स के जनरेटर्स क्या होंगे। तो ये एक हमेशा से डिफिकल्ट टास्क रहता है कि मैं डायरेक्टली भी डिफाइन आपको करा सकता था कि ये सब मॉड्यूल होगा, मगर ये कि हम लोग खुद से ही देखेंगे कि उस सब मॉड्यूल्स के जनरेटर्स क्या होना चाहिए, बिकॉज वी जस्ट वांट टू सी that when the tensor when the we want to make canonical map as a bilinear map. So actually so you can simply see that this map because there exists a canonical map from here to here, so you can also see a canonical map from this module to this quotient module. So this is also a canonical map. सो इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं कि अगर यहाँ पे कि मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक m क्रॉस n का ये जो मैंने लीनियर कॉम्बिनेशंस बनाए थे इनका एक मैं क्वोशंट मॉड्यूल लेना चाह रहा हूँ, लेट्स से विद सम मॉड्यूल s. So we know that there exists a canonical map from x from m cross n to this thing. And what is a canonical map? That if x comma y is here, then output uh, then here output is the coset induced by x comma y with respect to x. So इसको मैंने ऊपर डायग्राम के जरिए बता दिया और नीचे थोड़ा सा algebraic notations के जरिए बता दिया that if I want to construct a quotient module, then there exists. So I want to see actually. So what is the remark that I want to see this canonical map I want to see this canonical map as a और बल्कि आप इसको इस तरह से लिखें, ज़्यादा अच्छा लिखा है तब आपको समझ में आएगा ये प्रॉब्लम। तो अब एक क्वेश्चन है आप लोग से बड़ा कि अब ये सोचने की कोशिश करें कि मैं when the canonical map uh, canonical map is a bilinear map. तो आंसर ये है कि तो when the canonical map is a bilinear map, so I just want to see this because what is the task? I want to define a bilinear map for the construction of tensor product. I want to define a bilinear map from m cross n to t, from m cross n to t. So और टी को मैं ये काम नाम दे रहा हूँ कि ये जो मैप ये जो चीज़ मैं बनाऊंगा वो टी के बराबर होगी, यानी कि जब मैं क्वोशंट लूंगा m क्रॉस n का s से, देन आई एम सेइंग दैट इट इज इक्वल टू t. But for a tensor product, first we need a canonical map. First we need a bilinear map from m cross n to t. So there exists, अब हमें ये नज़र आ रहा है कि m क्रॉस n से टी के दरमियान जो टी है, दोबारा इसको लिख दूँ कि ये इस पूरी चीज़ को, ये जो क्वोशंट है इस पूरी चीज़ को मैं क्या कह रहा हूँ, टी कह रहा हूँ, इनके दरमियान एक canonical मैप तो जा रहा है। बट अब मुझे एस के जनरेटर इस तरह से सेलेक्ट करना है सच दैट दिस मैप would be a bilinear map. So actually we need to select generators of the R sub module S of m cross n in such a way
says that the canonical map would be a bilinear map. So this is the answer that we want to see, that when the canonical map is a bilinear map. So answer is this, that we need to select the generators. We need to select generators of this submodule, because this is S. Let's say this is S. So I want to construct the quotient module of this thing over S, of this module over S. So to make this canonical map a bilinear map, we need to select generators of S. तो यहाँ पे तक तो मैंने अपना प्रॉब्लम आप लोग के सामने कि एस के जनरेटर्स हमें किस तरह से सेलेक्ट करना होगा. अच्छा, जस्ट देखिए, क्वेश्चन में आपको ऐसे ही पता है कि वेन एवर समथिंग इज एन एलिमेंट ऑफ एस, वेन एवर समथिंग इज एन एलिमेंट ऑफ एस. अच्छा, ये मैप तो आपको वेन एवर ये मैप आपको कैनोनिकल मैप समझ में आ गया कि अगर एक्स कॉमा वाई है तो एक्स कॉमा वाई का इमेज क्या हो जाएगा इन दिस मॉड्यूल. इसको मैं दोबारा से यहाँ पे लिख देता हूँ. तो इनिशियली मेरे पास क्या था, एम क्रॉस एन था. Sir, would be a bilinear map now. हाँ, बाइलिनियर मैप बनाना है इसको. फिर हमने देखे, हमने जस्ट ये सर्च बनाया, ये चीज़ बनाई, एंड देन वी आर इंटरेस्टेड इन दिस थिंग. We want to construct a quotient module, and I am claiming that this quotient module, it is equal to t. But and we know that there exists a canonical map from x comma y to here. मैं बीच वाली चीज़ को अवॉइड कर रहा हूँ. और वो canonical map क्या है, वो हर एलिमेंट को क्या ले आता है, उसकी क्लास में ले आता है. So I am just taking this thing is x comma y bar. So अब मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि ये वाला जो मैप है, इस मैप को मैंने लेट्स से थीटा का नाम दे दिया. So initially theta is just a canonical map. So it is a canonical map. So now I want to see this canonical map as a bilinear map. So what I'm trying to say, that the binarity of this map is depending on the generators of S. Map is defined. It is just a natural map or a canonical map from M cross L to its quotient module. कि वो हर एलिमेंट को क्या लेके आ रहे हैं, उसी क्लास में लेके जा रहे हैं. So and what I am claiming, that this quotient module, actually it is uh, it is the tensor product. But what is an issue, आप ये कहेंगे सर tensor product है. So first first I need to show that a map from M cross N to this thing which I constructed here, which I am going to construct here. दिस मैप जो इनके दरमियान मौजूद है, इस मैप को क्या होना चाहिए, बाइलिनियर मैप होना चाहिए. सो अगेन मैं अपना प्रॉब्लम यहाँ पे लिख रहा हूँ कि दैट दिस मैप इज अ बाइलिनियर मैप डिपेंडिंग ऑन द जनरेटर्स ऑफ एस. तो हमें यहाँ पे एस के क्या जनरेटर्स चूज करना पड़ेंगे, जो मैं यहाँ पे लिखे थे कि ये वाला मैप है जो एक्स कॉमा वाई को, सो एक्स कॉमा वाई हेयर, और ये वाला जो मैप है एक्स कॉमा वाई को उसकी क्लास में लेके जा रहे हैं, यहाँ पे इस मॉड्यूल में उसकी एक्स कॉमा वाई बार में लेके जा रहे हैं. सो अब आप लोग अच्छा, अब इस वाले मैप को अब सिंपल ये मैंने ऊपर अब जस्ट बैरो छोड़ दिए और जस्ट यहाँ पे लिखा है. तो मैं दोबारा इसको प्रॉब्लम को लिख देता हूँ जो मैंने ऊपर मिस किया है, दैट वी नीड टू सेलेक्ट जनरेटर्स ऑफ एस
in such a way so so the in such a way और बल्कि इसको लिखा टू मेक द canonical map a bilinear map to make the canonical map theta to a इसको bilinear map थीटा फ्रॉम हमें इस थीटा को जो m क्रॉस n टू अब ये जो थीटा है जो इस तरह से डिफाइन है एंड इट इज डिफाइन इन दिस वे it is defined from m cross n to this thing. अब प्रॉब्लम को और मैंने सिंपल करके लिख दिया कि जस्ट मैप ये है और मैप किस तरह से काम कर रहा है थीटा मैप किस तरह से काम कर रहा है कि ये मैप किस में चलाएगा एक्स कॉमा वाई बार में चलाएगा। तो अब आपने बस एस के जनरेटर्स ऐसे सेलेक्ट कर दें कि ये मैप क्या हो जाए बाइलिनियर मैप हो जाए। अब तो अब अगर आप लोग ऊपर की सारी चीज़ें भूल भी जाएं तो जस्ट इस पे आप फोकस यानी कि रखें। ऊपर वाली सारी चीज़ें समझाने के लिए थी कि फिगर्स किस तरह से काम करिए। तो अब मैंने उनको बस समराइज कर दिए कि हमारे पास m क्रॉस n है and we have a quotient module this thing and from this m cross n r module to its quotient module there exists a canonical or a natural map. Now I want to see this canonical map as a bilinear map and it is depending on the generators of S कि मैं S को किस टाइप के एलिमेंट से जनरेट करूं। देखिए अब एक प्रॉपर्टी आप हमेशा से क्वोशंट मॉड्यूल्स की पढ़ते रहें दैट व्हेनेवर समथिंग इज इन S तो जब मैं क्वोशंट मॉड्यूल कंस्ट्रक्ट करूंगा तो क्वोशंट मॉड्यूल में उसकी जो क्लास होगी वो 0 की क्लास के बराबर हो जाएगी। ओके सो बाइलिनियरिटी के लिए इन ऑर्डर टू अचीव bilinearity we need to show हम लोग को क्या शो करना है नंबर 1 पे we need to show that जो कंडीशंस है क्या कंडीशन है कि थीटा ऑफ x1 प्लस x2 क्या होना चाहिए थीटा ऑफ x प्लस कॉमा y it should be equal to theta of x1 comma y plus theta of x2 comma y. What is the meaning of this thing? अगर मैं इसको मैं इसको अगर इस टर्म में लिख दूं कि x1 प्लस x2 comma y की जो क्लास है it should be equal to the class of x1 bar plus class of x2 comma y bar कि इन सब की जो क्लासेस होना चाहिए कि ये इन सब की क्लासेस क्या होना चाहिए बराबर होना चाहिए। सो फ्रॉम हेयर अच्छा ये भी आपको प्रॉपर्टी पता है कि इफ क्लासेस ऑफ टू एलिमेंट्स आर इक्वल देन देयर डिफरेंस वुड बी एन एलिमेंट ऑफ ये एक चीज़ भी होती है कि इफ़ यू आर वर्किंग विद एन आर्बिट्री सो इफ़ यू आर वर्किंग विद एन आर्बिट्री जब आप किसी भी क्वोशंट मॉड्यूल में काम कर रहे होते हैं m क्रॉस n में so we know that x plus n it is x plus n sorry it is equal to y plus n कि अगर इन दोनों का डिफरेंस किस में बिलोंग कर रहा होगा n में बिलोंग कर रहा होगा तो दिस इज जस्ट
This is just a property of cosets. तो cosets की properties हमें बात मालूम है. So here we can see that the coset induced by this element is equal to the coset by this element. So from the definition I can simply imply that x1 plus x2 comma y minus x1 comma y minus x2 comma y, it should be an element in S. So this class, any problem in this step? I think No, sir. Munira No, and sir. Nakiba. Sir. So actually हमें तो for the first step हमें S के बारे में क्या पता चल गया? That S should contain this kind of elements. Okay. In the same way, अब मैं बाकी सारी चीज़ें जल्दी जल्दी लिख देता हूँ. For the second thing, for the second condition, what we need to show that r comma xy it is equal to theta of r. So actually in this case, uh, the class of rx comma y it is equal to r of x comma y bar. So in this case, we can see that rx comma y minus r into xy it is an element in S. So this is so what is the point that or in the same way using अब मैं third और fourth को नहीं दिखा रहा. From the third and fourth property you can imply this thing that y1 plus y2 minus x comma y1 minus x comma y2 it should be an element of S, and also x comma ry it is equal to minus r, it should be an element of S. So actually, if we want to see that theta a canonical map is a bilinear map, so we should have these kind of conditions. So we this condition, this condition, this condition, and this condition. So in the end, actually, so what we can conclude that S is a submodule. So S is an R submodule. So S in an R submodule such that उस S जो जनरेट हो रहा होगा वो इस टाइप के एलिमेंट से जनरेट हो होगा such that S is generated by these kind of elements. S is an R submodule of M cross N. कि इसके जनरेटर्स क्या होंगे? x1 comma x2 minus y1 where x1 and x2 are sitting in Mn and y is an element of N, and Rx comma y is equal to minus, and here R is an element of R, and also it is generated by तो यहाँ पे जनरेटर्स है सारे, तो ये जनरेशन का निशान. So it is generated by x comma y1 plus y2 minus x comma y1 minus x comma y2, and x comma rx minus r times, and here again y1 y2 are in n and x is in m. So actually in this way we can define uh, uh, an R submodule S of m cross n. Now one can see कि अब मैं इस वाली चीज़ को स्किप कर रहा हूँ कि अगर मैं m क्रॉस n से
इसमें जाऊँ m क्रॉस n. So now we can see by taking generators of S in such a way, so ये जो canonical map हो जाएगा, so is a, अगर S में S के generators ऐसे choose करूँगा, so this canonical map is a bilinear map. So this canonical map is a bilinear map, or now I am saying that this thing so this thing it is equal to T. So in this way we constructed the tensor product of M and N. So we constructed the tensor product of M and N, which is equal to T, and it is just defined as the quotient module of the free module generated by M cross N over S, where S is defined in this way. And why we selected these generators of S? Because from M cross N to this quotient module, I want to see this canonical map theta, which is the national map, as a bilinear map. So that's why I selected generators of S in this way. So यहाँ पे तो हमने बाइलिनियर मैप अब हमने ये बना लिया कि हमने डिफाइन कर लिया. So you can see theta. So or definition by construction, you can see theta in this way, or t in this way, sorry, t in this way. बट ये इनफ नहीं है. हमने टेंसर प्रोडक्ट की डेफिनेशन में क्या देखा था, दैट अ टेंसर प्रोडक्ट इज अ पेयर टी विद अ बाइलिनियर मैप satisfying the universal property. Now we constructed t, as we can see from here. We constructed t in this way, and we also constructed a bilinear map from m cross n to t. So we constructed t with a bilinear map theta from m cross n to t. But still we need to show that this t still we need to show that this t is satisfying the universal property of the tensor product. ये still हमें show करना है, because this is the part of the definition that tensor product is a pair t comma theta, where t is an R module and theta is an theta is a bilinear map from m cross n to t, and such that they will satisfy the universal property of the tensor product. तो हम ये देखेंगे कि ये जो चीज़ है, ये यूनिवर्सल जो टी की मैंने कंस्ट्रक्शन करी है, ये यूनिवर्सल प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करवाएगी. ओके, सो यूनिवर्सल प्रॉपर्टी क्या कहती है, दैट सो हियर वी हैव m क्रॉस n एंड हियर वी हैव t. So and universal property क्या कहता है, whenever so now I know that there exists there exists a bilinear map from here to here. And what is a bilinear map? That whenever x comma y is here, so here I will get the class of x comma y, and we know that this map is a bilinear map. So what is the universal property? That whenever there exists a bilinear map from f to k, then there always exists a linear map from t to k, such that diagram commutes. So it is given that f is a linear map, and now we want to construct f bar. So ये बहुत natural. So f, so uh, if we are working here, so just define f bar in this way. So if you are working with x comma y, तो हम x comma y का image under f भी ले सकते हैं, which is here, and the image is f of x comma y. तो यहाँ पे क्या करें, define
एफ टिल्डा फ्रॉम टी टू के, उसकी डेफिनेशन क्या होगी एफ टिल्डा की, दैट image of this element. So T contain elements which are in this form. Image of any element x comma y bar, it is just equal to the image of x comma y. So by construction we can go in this way. So हमने जो we can go in this way. So that if I want to compute the any element, so elements of T are classes, are equivalence classes, or are cosets. So here the image of any coset is just the image of x comma y under f. So f bar is defined in this way. Now one can check first thing that f bar, which is defined in this way, this is an R linear map. So this is an R linear map. So why this is an R linear map? Because uh, let's say, तो R linear map के लिए just ये necessary होता है कि जगह if we have two elements, तो by definition उनका जो इमेज होगा किसके बराबर होगा, f of, अच्छा ये सम है इन लोग का, it is equal to, okay, f of x. so अगर मैं इसमें सम में यहाँ पे कोसेट्स है और प्रोडक्ट ऑफ, हाँ, so it is equal to x1 comma x2, y1 comma y2. So using the bilinearity of f, you can say that it is equal to, so x1 comma y1, क्या बाइनरिटी से ही कह सकते हैं क्योंकि एक्स पहले इसमें तो चार टर्म्स आ जानी चाहिए. ओके, आई जस्ट नीड टू चेक दैट व्हेन दिस मैप, सो एक्चुअली एफ हमारे पास लीनियर मैप होगा, इसको भी चेक कर लेते हैं. और द सेकंड थिंग, so f is defined in this way. So f is a map from T to K and it is defined in this way such that f is a linear map, and also it is satisfying this property. Which property it is satisfying? That by definition अगर मैं पहले किसी x, y में पहले मैं थीटा अप्लाई करूं और फिर f अप्लाई करूं, तो ये बाय डेफिनेशन किसके आ जाएगा, और f टिल्डा अप्लाई करूं तो बाय डेफिनेशन ये किसके आ जाएगा, x, y whole bar, and this is also equal to f of x, y. सो अगर मैंने f टिल्डा कॉम्पोजिशन थीटा में x, y पुट किया तो आंसर क्या है, f f x y के बराबर है. तो इट इम्प्लाइज दैट f टिल्डा कॉम्पोजिशन थीटा इट इज इक्वल टू f. तो ये सेकंड प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हो गई. तो जस्ट अभी ये इस चीज़ को चेक कर लेंगे कि f क्या है, f क्या लीनियर मैप है. तो यहाँ पे मैंने कंस्ट्रक्शन पार्ट इसका कंप्लीट कर लिया. तो मेरे दो पार्ट थे थ्योरम के, दैट फर्स्ट आई नीड टू कंस्ट्रक्ट T in such a way such that the map from M cross N to T is a bilinear map. तो कंस्ट्रक्शन के लिए मैंने एक क्वोशंट मॉड्यूल बनाया. तो from M cross N to the quotient module there exists a canonical map, and then we have seen that when this canonical map would be a bilinear map. ओके, नाउ जो सेकंड पार्ट है वो हमारा यूनिकनेस वाला पार्ट है.
I want to show that this tensor product uh, would be unique. So uniqueness के लिए just हम assume कर लेंगे कि suppose we have two pairs satisfying the conditions for the tensor product. Suppose t comma theta and t bar comma theta bar uh, satisfy the conditions. Suppose t comma satisfy the conditions for the tensor product. So these two pairs are satisfying the conditions for the tensor product. What we need to show? We need to show that these. So हमारा task क्या होगा? That these two things are equal, or these two things are isomorphic. तो ये हमारा claim है. Uniqueness show करने के लिए हमें ये show करना पड़ेगा कि that if there are two pairs satisfy the conditions for the tensor product, then both t and t dash they are isomorphic as R mod V's. Now since they both are satisfying the condition for the certain product, so both are satisfying the universal property of the tensor product. So we know that m cross n to t, so it is given that this is a bilinear map. So what is the universal property? That whenever we have a bilinear map from m cross n to another module, then we can always construct a linear map from T to this thing. So यहाँ पे just मैं क्या लिख रहा हूँ? अब T dash लिख रहा हूँ. So now using the universal property of the tensor product, so this map, so it is given that theta bar, it is a map from m cross n to T dash. So using the universal property, there exists phi, which is satisfying, which is a linear map, and such that ये diagram क्या करेगी, compute करेगी, such that पहले मैं theta apply करूँ और फिर मैं phi apply करूँ, so it is should be equal to theta bar. So here I am just using the universal property of the tensor product. Now again in the same way, we also know that m and n t bar comma theta bar is also satisfying the condition for the tensor product. So it is given that from m cross n to t, this map is a bilinear map. So again, geometric. सर यहाँ पे आपने जो लिखी है पाई ऑफ थीटा इक्वल्स टू थीटा बार, सर यहाँ पे पाई ऑफ थीटा बार नहीं होगा? नहीं, पहले थीटा अप्लाई होगा, फिर पाई अप्लाई होगा, पहले थीटा अप्लाई होगा, फिर पाई अप्लाई होगा, तो वो बराबर किसके आ जाएगा? थीटा बार के. ऊपर जो हम कर रहे थे F12 असल में थोड़ी सी मैंने देखा वो ये चीज लिख रहे थे. देखिए ये वाली बात है ना कि हम पहले ये जो मैप होता था डायरेक्ट F2 के, वो इन दोनों मैप की कॉम्पोजिशन के बराबर होता था ना. अब मैंने असल में किया ये कि टी को उधर लिख दिया. अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो मैं उसको उधर ही लिख देता हूँ. अच्छा सही, मैंने टी को जस्ट उधर लिख दिया था, मैं टी को भी उधर लिख दिया. So in the same way, by the definition, theta bar m cross n to t bar, this map is a bilinear map.
So this map M cross N, so this is a bilinear map, and it is given that from M cross N to T, theta is also a bilinear map. So using the universal property of the tensor product for T bar, we can construct, or there exists some psi from there exists a linear map psi from T bar to T, such that this diagram commutes. So commutes करने का मतलब क्या है? That if we apply theta bar and then apply psi, so it is equal to theta. So we have these two conditions, this condition and this condition. So for the first condition, I apply the universal property of the tensor product for T, and for the second condition, I applied the universal property for the tensor of the tensor product for T bar. तो यहाँ पे जो थर्ड मॉड्यूल ले लिया था, इन दिस केस थर्ड मॉड्यूल को मैंने ट्रिक से टी बार ले लिया, और यहाँ पे जो मैंने एक थर्ड मॉड्यूल जो लिया उसको टी ले लिया. ओके, now I want to show uh, 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 that this, okay, and also we know that this map यूनिवर्सल प्रॉपर्टी क्या बताती है कि ये जो मैप्स होते हैं ये यूनिक मैप्स होते हैं. Okay, now just try to see this thing, that if I take so we know that phi is a map from T bar T to T bar, and psi is a map from T to T. So if I take the composition psi composition phi, so I will get a map from T to T in this way. So now we have a map from so now we consider a diagram. Consider the following diagram. So what is the diagram? That from M cross N to T, so it is given that this map is a bilinear map, and again we know that यहाँ पे भी मैंने T रख दिया. This map again, so this map is a bilinear map theta. So we know that this composition, so we know that we also know that psi composition theta is a map from T to T. सो फर्स्ट आई वांट टू शो दैट ये जो डायग्राम मैंने बताई है, ये डायग्राम कम्यूट करेगी. अच्छा, ये बात याद रखिएगा कि यहाँ पे जस्ट हमने जस्ट पहले भी डेफिनेशन में ये बात की थी कि जो मैप एग्जिस्ट करता है, ये जो मैप एग्जिस्ट करता है एफ टिल्डा वाला, ये जो मैप एग्जिस्ट करता है एफ टिल्डा वाला, ये मैप क्या होता है? यूनिक होता है. तो आप कंस्ट्रक्शन में भी देख सकते हैं कि जो हमने एफ टिल्डा बनाया था, so in the construction we constructed f tilde, so it is just depending on f. So you can see that this f tilde actually a unique, so this is a unique R bilinear map, and सही दैट ये डायग्राम क्या हो रही थी? कंप्यूट करी थी. तो यूनिक क्यों होगा? बिकॉज एफ टिल्डा इज जस्ट डिपेंडिंग ऑन एफ. तो दैट्स वाई, तो एफ हमारे पास एक ही मैप है, तो एफ टिल्डा इज जस्ट डिपेंडिंग ऑन एफ, सो दैट्स वाई इट वुड बी यूनिक. तो ये ध्यान में रखिएगा कि जितने भी मैप ये एग्जिस्ट कर रहे हैं थीटा, जैसे ये थीटा एग्जिस्ट करे तो यूनिक है, तो यूनिक होने के लिए हम कोलन बना देते हैं. सो दिस इज अ यूनिक मैप, दिस गामा इज अ यूनिक मैप which is satisfying this condition. So now first I want to show that this diagram, so ये diagram क्या करेगी? commutes करेगी. commutes. So ये diagram क्यों commute करिए? Just try to see
तो कम्यूट करने के लिए हमें क्या शो करना पड़ेगा कि इफ़ आई मूव फ्रॉम हियर, इफ़ आई अप्लाई दिस मैप एंड देन अप्लाई दिस मैप, so I should get this map. So for this purpose, if we take the composition of psi composition theta of phi with theta, so यहाँ पे जस्ट हम क्या कर सकते हैं कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं. So it is equal to phi composition theta. अब हमें यहाँ पे कहता है कि phi composition theta किसके इक्वल होता है. phi composition theta किसके इक्वल होता है, थीटा बार के इक्वल होता है. So it would be equal to, so it would be equal to theta bar from the first condition, and from the second condition psi composition theta bar किसके बराबर होता है, थीटा के इक्वल होता है. ये जस्ट चीज किसके इक्वल होती है, थीटा के इक्वल होती है. सो एक्चुअली वी प्रूव्ड कि हमने पहले ये वाला मैप अप्लाई किया एंड देन ये अप्लाई मैप किया, देन अगेन आई गॉट दिस मैप. नाउ यूजिंग द यूनिवर्सल प्रॉपर्टी ऑफ टेंसर प्रोडक्ट, okay, and also we can see that this map that ये वाली डायग्राम भी क्या करेगी, कम्यूट करेगी. यहाँ पे मैं क्या ले लेता हूँ, आइडेंटिटी टी ले लेता हूँ. तो नेचुरली क्या करेगी, ये वाली डायग्राम भी क्या करेगी, कम्यूट करेगी. So this diagram will so commutes. So now from the definition of the tensor product we know, अगर मैं इस वाले मॉड्यूल को एज अ थर्ड मॉड्यूल के तौर पर ट्रीट कर रहा हूँ, इफ आई एम ट्रीटिंग this module as a third module, that by definition there exists this is given, and then for every bilinear map from m cross n to t, so there exists a unique bilinear map. So अब हमें, अब अगर if you compare the first diagram, if you compare the this diagram, if you compare this diagram with the second diagram, तो ये तो गिवन था, ये वाला पार्ट तो गिवन था, बट फॉर दिस थीटा, for this theta there exists a linear map for this because phi दोनों linear map है तो उनका composition भी क्या होगा, linear map होगा, because psi and phi both are linear map. So for this theta there exists a linear map from t cross t, and also for the same theta there exists a linear map identity from t cross t. मगर हमें डेफिनेशन से तो पता है कि फॉर अ गिवन बाइलिनियर मैप, for a given from the definition we know that for a given bilinear map there exists कि जब m क्रॉस n टू t, ये तो गिवन है, तो जब भी हमारे पास यहाँ पे बाइलिनियर मैप एक होगा तो यहाँ पे एक यूनिक लीनियर मैप एग्जिस्ट करेगा. देयर एग्जिस्ट यूनिक लीनियर मैप. सो अगर यहाँ पे मैं टी लिख दूँ फॉर दिस बाइलिनियर मैप, so there exists a unique bilinear map, there exists a unique linear map from t cross t, but from the diagram number 1 and from 1 and 2 we can see that there exists this linear map from t cross t, such that ये डायग्राम क्या हो रही है, यहाँ भी डायग्राम क्या होना चाहिए, कम्यूट होना चाहिए, such that ये वाली डायग्राम कम्यूट हो रही है, and there also exists a linear map identity from t cross t such that ये वाली डायग्राम क्या हो रही है, कम्यूट हो रही है. So due to the uniqueness of this map, we can apply. So due to the uniqueness,
वी कैन इम्प्लाई, क्योंकि ये वाला जो मैप होता है ये यूनिक होता है, सो वी कैन इम्प्लाई दैट दिस थिंग psi composition theta, it is equal to the identity of t. So now in the same way, we know that uh, phi composition psi, it would be a map from t bar to t bar. So in the same way, you can show that this theta phi composition theta, this phi composition psi, which is a map from t bar to t bar, it is equal to the identity of t bar. So initially we know that psi and phi, we know that psi and phi, हमने actually ये चीज़ show करी थी कि that psi composition phi, it is equal to the identity of t, and also we know that we can prove that phi composition psi, it is equal to identity of t bar, and these two maps are linear maps. So from this condition and from this condition, we can imply that T is isomorphic to T bar, because phi is a map from T to T bar, which is an R linear map. Phi is a from T to T bar is an R linear map. Uh, Psi, it is from T to T bar, and it is also an R linear map, and their composition, it is equal to identity. That is, both maps are bijective, which implies that these two modules are isomorphic. So अब हमने क्या कहते हैं टेंसर प्रोडक्ट की कुछ मेन प्रॉपर्टीज को देखिए, that how can we construct the tensor product and it would be unique. सो अब हम जब हम टेंसर प्रोडक्ट को एग्जांपल्स के लिए कंप्यूट करेंगे तो वी विल ट्राई टू कंप्यूट द टेंसर प्रोडक्ट विद द हेल्प ऑफ सम मोर प्रॉपर्टीज which will derive with the help of the construction. तो मोस्ट ऑफ द टाइम हम कंस्ट्रक्शन को यूज़ करने की कोशिश नहीं करेंगे, बिकॉज इसकी कंस्ट्रक्शन बहुत एब्स्ट्रैक्ट है. हम कुछ प्रॉपर्टीज ड्राइव करेंगे, एंड विद द हेल्प ऑफ दोज प्रॉपर्टीज we will try to compute the tensor product. So now we know that for m and n, for R modules m and n, if these are R modules, I can compute T, which is or I can construct T, or I tensor product of m and n. So इसके लिए बहुत स्पेशल एक नोटेशन होती है. Now, and since we know that it is this product is unique, so इसको इस तरह से लिखा जाता है. So this m tensor n, इसको टेंसर की नोटेशन पढ़ते हैं. m tensor n is the tensor product of m and n. तो ये अब मैं अंदर जो टेंसर प्रोडक्ट के लिए कि ये नोटेशन अब यूज़ करेंगे. एंड सो और यहाँ पे हमें पता है कि एक चीज़ हम लोगों ने देखी थी कि m क्रॉस n टू t है. तो इनिशियली हमने t को एज अ क्वोशंट मॉड्यूल के तौर पर देखा था. तो जब क्वोशंट मॉड्यूल के तौर पर देखा था, तो हमारे पास x, y जो होता था, उसकी जो क्लास थीटा होता था, तो किस में जाता था, थीटा एक्स वाई में जाता था, एंड इट इज़ इक्वल टू x, y बार. अब हम इसके लिए जो नोटेशन यूज़ करेंगे, we will write this thing, it is equal to x tensor y. So this thing is termed as a tensor monomial. So हम इसको डायरेक्टली बस ऐसे भी लिख सकते हैं that for x and y in M, so it will imply
so from m cross n, अब चूंकि टेंसर प्रोडक्ट के लिए भी स्पेशल नोटेशन हम लिख दिए, तो फ्रॉम m क्रॉस n टू m टेंसर n देयर एग्जिस्ट थीटा सच दैट थीटा ऑफ x कॉमा y किस जो बाइलिनियर मैप होगा वो x कॉमा y को किस में ले जाएगा, x टेंसर y में ले जाएगा. So in the next class we will study some properties of the tensor product, and we also see a few example for of the tensor product कि हम कुछ examples बकायदा लेंगे, कुछ modules लेंगे और उनके tensor product को compute करने की कोशिश करेंगे. Okay class, so any problem? Parisha, Nakib, Atik? Okay, Sir. thank you. Allah Hafiz.